कि सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक और वो सारा ऑप्टिकल भी कर लिया था, क्या ऑप्टिकल नहीं किया था? हमने ऑप्टिकल ही किया। नहीं सर, ऑप्टिकल नहीं किया। अच्छा नहीं, पहले तो ऑप्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी क्विकली, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड डू ऑप्टिकल। अच्छा इसकी वो सर एक, ये ऑप्टिकल वही है ना जिसका आप कह रहे थे कि कैरल सेंटर था? हाँ काइरल सेंटर्स, यानी वो जो दो हाथों की तरह है, ठीक है, आपके जो दो हाथ है ना, मिरर इमेजेस, ठीक है, दोज आर व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्स आर, ठीक है। तो पहले ऑप्टिकल जल्दी से कर लेते हैं, फिर वो पास पे कर लेते हैं, इसको हम जल्दी खत्म करते हैं कि, और मुझे एक सेकंड देना, ये मैं बोर्ड कनेक्ट कर लूं। चलिए बोर्ड कनेक्ट हो गया, 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे अब ऑप्टिकल आइसोमर्स करने, ऑप्टिकल आइसोमर्स में था कि यू हैड पहले मिनिमम कंडीशंस। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर बेसिकली क्या होते हैं कि पहले तो कंडीशंस, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, अच्छा these are minimum condition, you need an sp3 hybridized carbon atom, ठीक है, that's the first one। यानी एक तो sp3 hybridized carbon atom, and it should be bonded to four different groups, or sides should be bonded to, so it should be bonded to four different groups, four different groups, मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है, they should be different। और इसको कहते हैं कि द कार्बन आटम मस्ट नॉट हैव अ प्लेन, मतलब ये जो sp3 hybridized carbon atom, and I'll explain this in simple way as well। So the other thing is this sp3 hybridized carbon atom, when it's bonded to four different groups, it should have no line or plane of symmetry, should have no plane or line or plane of symmetry, ठीक है, that is a must। Now the example is of your hand, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अगर मैं वैसे एक इमेज पहले सर्च कर लूं, हैंड्स एंड काइनलिटी, 1 सेकेंड। सर हाँ जी, सर जब चारों डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब कोई सिमेट्री बनेगी ही नहीं ना? हाँ चारों डिफरेंट होंगे तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सिमेट्री, ठीक है। सो दिस इज, अगर ये नजर आए, 1 सेकेंड। सो दैट इज वन एग्जाम्पल कि आपके जो हैंड्स है ना, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये बीच में विल ऐड दैट कि वो समटाइम्स शुड हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। So both optical isomers are non-superimposable. So both optical isomers are non-superimposable mirror images. But it has to be, when there is no line of symmetry, they should be non-superimposable mirror images. अच्छा जैसा mirror images. Now mirror images में ना, this is a must, they should be non-superimposable, there should be no line of symmetry। क्योंकि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो ना, यू डोंट सी एन इशू। जब आप अपने आप को रोज शीशे में देखते हो ना, देयर इज नो डिफरेंस इन द मिरर इमेज एंड यू, क्योंकि यू हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री राइट इन द मिडल, योर राइट साइड एंड योर लेफ्ट साइड दे लुक एग्जैक्टली द सेम। तो लेकिन आपका जो मिरर इमेज है ना, एंड योरसेल्फ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि वो जो लेफ्ट और राइट है ना, वो स्विच हुआ होता है। लाइक योर राइट हैंड in reality is your left hand in the mirror, but you don't feel a difference. The reason you don't feel a difference is because there's a line of symmetry. Your left hand and your right hand, they look exactly your left arm and your right arm, the whole structure, it looks exactly the same. So you have a line of symmetry. There's a line of symmetry. You look at your face, uh,
in the mirror you don't have any issues looking at your face because आपका जो face है that has a line of symmetry. Although आपकी जो right eye है ना mirror के अंदर that's your left eye. Switch भी होती है, but you don't feel any difference because you don't even notice that. तो जब line of symmetry होती है ना, your mirror image looks exactly like you. There's no difference. But when there is a line of symmetry that's missing, जिस तरह ये hands हैं, ठीक है, there is no line of symmetry. You take your hand, उसको जहां मर्जी से डिवाइड कर लो, यहाँ बीच में लाइन लगा दो, साइड पे लगा दो, किसी भी डायरेक्शन में लाइन लगा दो, देयर इज नो सिमेट्री. द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड और द टू साइड्स, इस हैंड को ना कहीं से भी बीच में से कट कर लो, द टू साइड्स वुड ऑलवेज लुक डिफरेंट. तो इस केस में होता है व्हेन देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, द मिरर्ड इमेज would be drastically different. It would be non-superimposable. यानी इसको जैसा मर्जी घुमा लो ना, it would not be superimposable. दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना, direction of something would be different, right? Is that clear? So the line of symmetry has to be missing for the mirror image to be different. Clear है सारों को? Sidra, is this clear? Ospa? So, and the obvious example is if there is a line of symmetry, you look at your face in the mirror, it looks exactly the same. There is no difference. In your face in the mirror, there's a major difference that the left and right side have switched. So that is what chirality is. So both optical isomers should be non-superimposable. They should have no line or plane of symmetry. And any carbon that does not have a line or plane of symmetry, that's known as a chiral carbon atom. So that's known as a chiral carbon. Okay, the word is used, chiral. Now, this whole thing, all of this that I wrote down, okay, that is what you should write in your paper if they ask you for optical isomers. But the understanding of this is very simple. What you need basically is this thing. You need a carbon atom, and you want that carbon atom to be bonded to just 4 different groups. It should be sp3 hybridized, which means it should be tetrahedral. So what that would do is that there would be an angle of 100 and there would be an angle of 109.5 degrees. It's going to be tetrahedral and 4 groups are going to be different. Haji. So इसका trigonal planar shape नहीं होगा इसका? नहीं, 4 bonds के साथ it's tetrahedral. ठीक है. तो वो किस में I guess उसमें था? sp2 hybridization में था. वो जो हमने geometric isomers नहीं किए थे, we did geometric isomers before this. Okay. उसमें 120 degrees बना रहा था, right? हाँ, क्योंकि उसमें ना वो डबल बॉन्ड था ना, तो डबल बॉन्ड में वो एक इलेक्ट्रॉन जो था that was busy forming the double bond. तो वो 3 बॉन्ड्स होते थे, तो that was fan shaped. तो उसके अंदर वो रोटेशन भी पॉसिबल नहीं थी. So this is sp2 hybridization उसमें in geometric isomers. In optical, where's optical? You will have अच्छा, ये सारा ना पेपर में डिस्क्राइब करना है. वो पूछेगा कि भाई क्यों होती है ये, why does it form optical isomers? Because you have an sp3 hybridized carbon atom which is bonded to 4 different groups and it's got no line or plane of symmetry, which means it's got a chiral carbon atom, and both optical isomers are non-superimposable mirror images. In simple words, this is it. You need a carbon atom, and that carbon atom should be bonded to 4 different things, anything, but it should be different. All 4 of them have to be different. So that is what a chiral carbon atom looks like. Or mirror images, there's going to be 2 versions of this molecule. Okay, that's your chiral carbon atom. And there are going to be 2 versions of this molecule. So that's one of them. And here's your other one. This other one would be, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा. That would be a mirrored version. So drawing this mirrored version would be tricky. Okay, make sure you know how to draw a mirrored version. Mirrored version में the left and right side they switch. So what's going to happen is that you'll have if you look at the mirror, तो ये top वाला तो वही रहेगा, ठीक है? That would look exactly that would kind of look exactly the same. ठीक है? So that's the top part. अच्छा, dotted bond जो है वो भी यहाँ पे है. On this side it would be the other way around. So the X would be on this side.
And the W, that would be mirrored as well. Sorry, Y would be mirrored as well. The Y is right now, so it's going to be in this direction. So that is going to be your, Excuse me, sir. हाँ जी, सर मैं पूछना चाह रहा था ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? chiral carbon. ठीक है, that's your chiral carbon. और Z जो है ना वो दूसरी साइड पे. So the star represents the carbon around which there is no line of symmetry. It should be bonded to 4 different groups. So basically you're looking for this carbon atom. Around this carbon atom, this is where the optical isomerism would happen. The molecule would exist in 2 shapes. One of them would be this one, and the other one would be a mirrored version of the same thing. Both of the shapes are different. Just like your 2 hands. Your left hand is different from your right hand. This molecule is different from this molecule. They're completely 2 different molecules, except they look very similar, but they are mirrored versions of each other. और exactly उसी तरह जिस तरह आप अपने hand को no matter how you rotate it, it never looks, the 2 hands are always non-superimposable. Some of the fingers are always pointing in the wrong direction. ठीक है, or the palm is facing in the wrong direction. So no matter what you do, they're non-superimposable. तो ये molecules भी ना, they're non-superimposable. इसको जिस तरह मर्जी rotate करो ना, it's not going to look like this one. No matter what you do, it would never look exactly like this. हाँ जी. सर वो आपने एक फार्मूला बताया था कि इस फार्मूला के बेसिस पर हमारे पास उतने आइसोमर्स होंगे, तो नहीं इसका वो भी तो कोई उसको तो फार्मूला है? हाँ उसका होगा ना, वो तो भी करते हैं ना, ठीक है, तो वो उसका कर लेंगे. और इसको आप गौर से भी देख लो कि imagine this is the pyramid at the bottom, right? This thing is the pyramid at the bottom. Even if you rotate, like वो हाथ वाली बात है कि if you rotate one hand, it still doesn't look like your right hand will still not look like your left hand. तो इस bottom वाले pyramid को ना, even if I rotate it, if I start rotating it in, let's say, this direction, that I start rotating it in this direction, just 1 second, board hang ho gaya. Just a second. अच्छा आगे. अच्छा, so if I start rotating this, तो हमने x को right side पे भेज देना, x will go to the right side, z would go to the left side. Think of this as pyramid sides. w top पे रहेगा, मैं ऊपर से ना उसको rotate कर रहा हूँ, spin कर रहा हूँ. So x will come to the right, z would come to the left, लेकिन ये जो y that's coming out of the base, that's pointing towards you, वो back side पे चला जाएगा. तो ये pyramid की जो side है ना, that will go to the back side. So even if you align all the other bonds in the same way, one of the bond is still pointing in the wrong direction. Okay, so no matter how you rotate this, it would never look like this. Is that clear? Is that clear? Raid, Mahad, Oswa, Sidra, is this clear? Yes, sir. अच्छा, and तो अब ये clear हो गया कि what you're looking for is this carbon atom, chiral carbon atom, और उसके इर्द गिर्द ना वो सारा isomerism होगा. So first thing is we're going to learn how to spot this chiral carbon atom, like how to find this chiral carbon atom. जैसा पिछले केस में ना डबल बॉन्ड ढूंढना होता था, इस केस में you have to look for this chiral carbon atom. So I'm going to draw a molecule. Remember, structural formulas are not the shapes of the molecule. So I'm going to draw a structural formula. कि उसके अंदर ना I've got an OH, a CH2, another carbon. There's another carbon atom. और ये आपके पास ना OH है और फिर उससे आगे CH3 है. अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कार्बन जो है लेफ्ट से काउंट करके बताओ कि which one is chiral? Is the left one chiral or not? No. ठीक है, that's not chiral. And what's the reason for that? Why is that not chiral? 2 H's. So it's got 2 H's. ठीक है, all 4 groups must be different. Is this chiral? No. ठीक है, that's not chiral. And which one is chiral? Is the third one chiral? Sir, Yes, that is sir. ठीक है, that is chiral क्योंकि remember you have to look at the whole side. You've got an OH on one side,
you've got a CH3 on one side. On one side you have so remember you have to look at the whole side, and on the fourth side you've got this thing. So this carbon will have two shapes. In 3 dimensions, this carbon will have two shapes. One of them would look like this, and the other one would be a mirrored version of this. So remember, just like geometric isomers happened around double bonds, the isomerism or the shape of the molecule would change around this carbon atom. And you'll be asked to draw those two carbon atoms. What I'm going to do is I'm going to take the same thing and just copy this. And I'm going to try and draw. They're going to ask you to draw this. So I'll just rub off W, X, Y, and Z. Okay, just get rid of that. और इस सारे को भी हटा दो. ठीक है, make sure the two shapes are mirrored versions of each other, right? सर हाँ. तो आप जब कार्बन की बात करते तो लाइक वो एंड तक जो चेंज चलती जाती है आप उसको देखते हैं उसके हाँ, बेसिस मैंने पर. इधर आप खड़े हो, ठीक है, इमेजिन करो कि आप इधर खड़े हुए हो. इस साइड पे देखोगे तो H है, इस साइड पे देखोगे तो OH होगा, उस साइड पे there's a CH3, on the other side there's CH2 OH, right? Is that clear? कि वो सारी यस सर. साइड डिफरेंट है, ठीक है, आपने पूरी साइड देखनी है, नेबरिंग को नहीं देखना कि यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे भी CH2 है. देखिए उससे आगे H आ रहा है, उससे आगे यहाँ पे CH2 एक और आ रहा है और फिर OH आ रहा है. सो दिस साइड इज डिफरेंट कंपेयर टू दिस वन. क्लियर है? तो यस. आपने पूरी साइड देखनी है, बिल्कुल साथ वाले को नहीं देखना, ठीक है. अच्छा, अब इसको ना फिट कर लो. अब रिमेंबर इसके साथ 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं. अब वो 4 ग्रुप्स आप रैंडमली कहीं भी लगा दो, इट डजंट मैटर कि एक जगह H है, एक जगह CH3 OH एंड you've got this thing. So पहला वाला जब ड्रॉ करो ना, you can put them any way you want. कि there's an H, इधर हम कर लेते हैं there's an OH, right? अच्छा, उस साइड पे there is a CH3 और फिर लेफ्ट साइड पे there is CH2 and then there is another CH2 and then there is OH, right? तो आपने शेप जो ड्रॉ करनी है ना, you don't have to draw the shapes of every atom, ठीक है, you have to draw the shape around this chiral carbon atom, that's it. वहीं पे शो करना है ना chirality, वहीं पे है. बाकी जगहों पे तो वो मिरर्ड इमेज वाला चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मिरर्ड इमेज एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि वो तो उसके अंदर तो लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो आपने शेप सिर्फ उस कार्बन के इर्द गिर्द शो करनी है. एंड सो द अदर वन would be the mirrored version, so everything would be laterally inverted, left to right switch हो जाएगा. So there's an H. इस साइड पे क्या आएगा? It's going to be CH2 CH2. अच्छा, it's going to be CH2 CH2 and OH, right? CH3 उधर right side पे था, इधर यहाँ पे CH3 would be on the left side, and over here there's going to be OH. ठीक है, so there's going to be OH. Is that clear? That's your two mirrored versions. So the molecule would exist in two forms. Both of them would be mirrored versions of each other, right? Is that clear? सर हाँ जी. सर आपने आइसोमर्स के रिलेटेड आपने कोई फार्मूला इससे पहले बताया था लाइक ऑप्टिकल आइसोमर्स के अलावा. ऑप्टिकल आइसोमर के अलावा क्या मतलब? अभी तुमने लाइक बात. आपने फार्मूला बताया था आपने जो फार्मूला कोई बताया था आइसोमर्स के लिए कि हाँ वो लाइक तो कैलकुलेट करना है. हाँ वो तो पहले बताया था, 2 to n बताया था. ये डबल बॉन्ड्स के लिए, कि अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं जो सिस ट्रांस बना रहे हैं, तो फिर टोटल कॉम्बिनेशंस जो होंगी वो 4 होंगी, क्योंकि सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस 4 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगी. और सर सिमिलरली इस तरह ऑप्टिकल के लिए भी कर सकते हैं राइट. हाँ वो कर सकते हैं, वो मैं आता हूँ उस पर. ठीक है. अच्छा, anyways, that's what you're going to draw. अब name, how do you name them? ठीक है. Now it's very hard to actually distinguish them. ठीक है. First thing, optical isomers are remember, all isomers, there is a huge difference in the chemical and physical properties. Optical isomers, specifically small molecules, almost have identical properties. Optical isomers, smaller ones, ठीक है, remember smaller ones, have identical chemical and physical properties.
Okay, so the properties are kind of identical. The melting and boiling points, I mean, they look exactly the same. Okay, just like your two hands, they look exactly the same. तो उनकी properties जो हैं जो आप अपने right hand से कर सकते, you can do it with your left hand as well. You can write with your right hand, you can also write with your left hand. It's so the properties are kind of similar, but there's going to be a huge difference when it comes to biological functionality. For example, biological functionality जो है वो shape specific होता है. So if you have a complicated molecule, the shapes are going to be very important. So if the CH3 in one molecule is pointing in the right direction, and the other one, the CH3 group is pointing in the left direction, the functionality would be different. Okay, enzymes वगैरह, how do they work? They operate. I mean, it's enzymes. Biology is very shape specific. If you know the कौन सा मॉडल है वो जो उसका लॉक की मॉडल. हाँ, लॉक एंड की मॉडल कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, if you know the lock and key model, ठीक है, in biology it's all very shape specific. So the shape has to exactly match. ठीक है, it has to exactly match, and तब जाके ना वो groups सारे match होंगे and the reaction will happen. Because biological molecules are like really big. You've got a cell, you've got a virus, DNA के मतलब कोई भी वो functionality होगी, that would be very shape specific. The shapes have to match together. Now the thing is, अब वो हाथ वाले example ले देता हूँ. Right glove होगा, only your right glove can enter that. If there's a left glove, if there's a shape that has, if there's a left glove, then only your left glove can fit in the, your left hand will fit in the left glove, right? So the shape specificity is very important in biology. So mirrored version जो है ना वो काम नहीं करेगी. One of them would work, the other one will not work. One of them would be able to fit like a key. मतलब आप अपनी key की ना, what you if you have a lock and key model उसी से कर लो. If you take a mirror image of your key, that key will not work. It won't be able to enter the lock क्योंकि it's going to have the complete opposite shape. So the point is, in biology, these things will matter a lot. Small molecules, उनके बीच में functionality वगैरह properties में there's not going to be much of a difference. But shape specificity is very important in biology. Is that clear? सर सर इसके कोई नाम नहीं होंगे, बस सिर्फ प्लस और माइनस होगा ना? हाँ, वो भी मैं उस पे आता हूँ. Is important in biology. ठीक है, एक भी बॉन्ड की डायरेक्शन जो है ना वो गलत होगी ना, everything would change. मतलब why do some people have curly hair? Why do some people have straight hair? That's the reason, because कहीं ना कहीं one of the protein, remember we built up of amino acids. Every amino acid is chiral except for one. All of them are chiral. तो if all of them are chiral, तो कहीं पे बॉन्ड ने राइट पे मुड़ना, लेफ्ट पे मुड़ना था, उधर वो राइट पे मुड़ गया. ठीक है, so the point is the direction of the bonds would be different. So the overall structure, the shape of the thing that's being produced, that would be different. Which is why वो जो slight changes आती है ना, वो होता है कि sometimes the chirality changes. Some people have curly hair. Why? Because somewhere down the line when the protein was being built, direction गलत हो गई है. ठीक है, so you got curly hairs instead of straight hairs. So these things matter a lot in biology. वरना उसमें difference नहीं है. अच्छा, plus and minus. Let's come back to plus and minus. What happens in plus and minus is कि you can't tell which one is plus and which one is minus by just looking at it. वो cis trans में ना you could tell, but ये मैंने randomly लिख दिया. I can't tell which one is plus and which one is minus. These two things are called enantiomers together. ठीक है, one of them is going to be plus and the other one is going to be minus. I'm going to explain why they're called plus and minus. Together they're called enantiomers. So these are known as enantiomers. So the reason why what plus stands for is the difference is both enantiomers would rotate plane polarized monochromatic light in opposite directions. You confirm में मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था. Is it? Rotate plane polarized monochromatic light in
plane polarized monochromatic light in opposite directions. I said they rotate plane polarized in opposite direction. One of them, the plus one, rotates it clockwise, and the minus one rotates it anti-clockwise. तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं ना, ये नहीं पता लगेगा. अच्छा, पहली चीज, what does this mean कि plane polarized monochromatic light? So remember कि there's a plane of polarization. Like if you have a wave, ठीक है, wave rope, I mean let's say पता नहीं, हाँ चलो ठीक है, ये example है. So but you've always seen in your books there's a person standing and there's a wave moving around, right? So and the particles are vibrating, right, up and down. तो कभी सोचा कि why are the particles vibrating up and down? Why not sideways? Remember, that's known as the plane of polarization. ये अपना हाथ ना ऊपर नीचे, if he's moving the hand up and down, that's the plane of polarization. Like the particles are vibrating up and down. The particles could easily have vibrated sideways as well. Is the idea clear? मतलब वो ये vibrate किसी भी direction में कर सकता था ना. Why did he choose up and down? So that's just one plane of polarization. The plane of polarization, that is in what direction are the particles vibrating? Are they moving up and down, or are they moving sideways, or are they moving at an angle of 30 degrees? Do you get my point? The idea clear? Yes, sir. So the wave, now you've always studied two-dimensional waves. Reality में वो अपना हाथ गोल गोल भी घुमा सकता था. That means there's a 360-degree plane of polarization. के मतलब the particles are vibrating everywhere in all directions. मतलब imagine कि एक wave आप create कर रहे हो and you're moving the rope in a circular motion. तो वो wave जो है ना वो गोल गोल घूमती हुई आ रही है, ठीक है? So the point is कि that's known as a plane of polarization. तो जब आप कहते हो ना plane polarized monochromatic light, what that simply means is plane polarized monochromatic light. That means this light. I mean, let's assume this is light. That means this wave. Okay, plane polarized. That means the particles are vibrating in only one direction. Let's assume they're vibrating only in up and down direction. They're not vibrating in the sideways direction. They're not vibrating at a 30-degree angle or a 60-degree angle. So plane polarized monochromatic light means it's a polarized monochromatic light. It means the particles are just moving in one direction. अब होता ये कि जब particles they're vibrating up and down and this wave goes and hits the tree, right? So the wave is going to get reflected. Imagine light wave, right? It's going to get reflected. So yeah, it will bounce off this tree, right? आप अपनी आवाज करते हो, it bounces off surface, right? So what happens is that when it bounces off, when it gets reflected, तो उसकी जो plane of polarization है, that changes. So maybe the wave is traveling and it's moving up and down, but when it hits the tree and it gets reflected, it starts moving sideways due to the change in polarization when it gets reflected. Is the idea clear? Sir, could you repeat the last point? Yeah, like there's a wave that's traveling up and down, right? It hits the tree, and maybe it hits the tree at a certain angle that when it bounces off, the wave particles, they change the direction in which they are moving. Maybe they start moving sideways. Okay, they stop moving sideways, up and down. मतलब यहाँ पे होगा वैसे rotating. Like if I see plane of polarization, ये इतना important point नहीं है वैसे. Waves. Maybe if there is an image. हाँ, ये थोड़ा ना मैं वैसे आइडिया देना चाह रहा हूँ. ये वो सर्कुलर वेव है कि वो रोप ना साइडवेज मूव करिए. सो दिस इज द ओनली, एक सेकंड में पहले ना ये बता दूं कि मैं बस ये कह रहा हूँ, इधर ही मैं एक्सप्लेन कर दूं. ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट एग्जांपल, बट लेट्स से वेव आ रही है, ठीक है, वो पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन एंड आल्सो मूविंग साइडवेज, राइट? वो हिट करती है ट्री को एंड इट बाउंसेस बैक. तो इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन, द वेव इज नाउ मूविंग साइडवेज. डू यू गेट माय पॉइंट?
So that means the plane of Yes, sir. polarization has rotated. ठीक है, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि व्हेन पार्टिकल्स दे मूव थ्रू अ मीडियम, वो आप उसमें नहीं होता रिफ्रैक्शन होती है कि वेव की डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेव की खाली डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उनकी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है ना अप एंड डाउन, उनकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दे स्टार्ट मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन. इज दैट क्लियर दिस पॉइंट? सर हाँ सर ये वो काइनेटिक थ्योरी की तरह मैं समझ सकते हैं कि लाइक वो मूव कर रहे थे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जब तक उसकी कोलिजन नहीं हो जाती. हाँ, मतलब वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे थे ना, तो वो वैसे तो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, वो यू कैन हैव सर्कुलर वेव्स, यू कैन हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्शंस ना, कि जैसा ये एक वो वेव थी, मैंने वो नहीं कहा था गोल गोल घूम रहे हैं पार्टिकल्स ना, देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, कि मैं अगर रोप को गोल गोल घुमा रहा होता तो पार्टिकल्स किस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, वेव इस तरह ट्रैवल करती हुई आज थी, दैट मींस दैट्स अ 360, मतलब हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स घूम रहे हैं. अच्छा, बट इसको सिंपल करते हैं, इसको रैप अप करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये. इसका सिर्फ मतलब ये है कि जब पार्टिकल्स ना व्हेन अ वेव पार्टिकल मूव्स थ्रू एन एनांटियोमर, तो उसकी जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ना, जिस डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो रोटेट हो जाती है, कि अगर वो लेट्स से अप एंड डाउन मूव कर रहे थे तो अब वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. इज दैट क्लियर दिस थिंग? यस सर. तो ये बस इसका मतलब था कि and both enantiomers are going to rotate the plane of polarization in opposite direction. कि एक वेव आ रही है, वो अप एंड डाउन मूव करिए, वो इसके थ्रू पास करती है, तो वो थोड़ी सी ना अप एंड डाउन की बजाय थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज, इधर वो थोड़ी सी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाती है, उसके पार्टिकल्स थोड़े से एंगल के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली दैट्स द वे, no one is going to ask any details about this, ठीक है, experimentally this is the way of figuring out which enantiomer is which one, right? Is that clear? यस सर. और उसके बाद बस ये कि a mixture of enantiomers is known as a racemate mixture. तो when you have सर हाँ सर आपने कहा था कि लाइक वो थोड़ा सा क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा तो जो अपसाइड डाउन लाइक वो जो मूवमेंट थी उसकी वो उस तरह से फिर उससे इसके हिसाब से चेंज नहीं होगा. क्या होगा? लाइक वो आप कह रहे थे कि वो लाइक अलोंग विद साइडवेज मूवमेंट की जिस तरह से आपने कहा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उससे फिर एच जो होगा वो चेंज नहीं होगा या CH3 वो तो ये चेंज उससे होंगे ना उनके नहीं, साइड. इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं तो कह रहा हूँ कि ये मीडियम है ना, इसमें से लाइट पास करेगी ना, कोई भी चीज है सोल्यूशन है, उसके अंदर से लाइट पास करेगी ना, तो जब लाइट पास करेगी तो लाइट पहले पढ़ा है ना उसमें ओ लेवल्स में कि रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है, यस सर. लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है. मैं कह रहा हूँ एक और चीज इसमें आप समझ लो कि लाइट की जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगी ना वो भी चेंज हो जाएगी, कि जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, ये उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा, ये उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है. ओके सर. अच्छा, मिक्सचर ऑफ एनांटियोमर्स इज नोन एज मिक्सचर जो होगा ना, दैट्स नोन एज अ रेसमेट मिक्सचर. सो मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस यानी बोथ एनांटियोमर्स, दैट वुड बी नोन एज अ रेसमेट मिक्सचर. ये बस एक वर्ड है जो याद रखना, ठीक है, इट्स दोनों का मिक्सचर अगर होगा ना सोल्यूशन में तो दैट्स अ रेसमेट मिक्सचर. अच्छा, एनीवेज इसको बस खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं, इसके पास पे प्रेस करते हैं कि रिमेंबर 2 to the n इस पे भी काम करेगा, कि if you have multiple optical isomers, अच्छा if you have multiple optical isomers, तो उस केस में क्या होगा, there is going to be 2 to the n, कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 आ गए ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो एक मॉलिक्यूल कर लेते हैं इसमें 2 आ गए, कि लेट्स से OH है, OH है, it's got Cl, ठीक है, either there's a Br, there's an H, and there's an H over here. Achha, can anyone tell me if both carbons are chiral or not? Is the first one chiral? Will it form? यस. ठीक है, because all four sides are different. मतलब और 4 sides में look at the whole thing, ठीक है, that's one side, and that's the whole other side, ठीक है. So all 4 sides are
different around this carbon atom. And the same applies to this carbon atom as well, because all four sides are different for this. There's an H, there's an OH, there's a Br, and there's this entire thing on this side. Okay? So all four sides are different around this one as well. This का मतलब है there's mirror images of this carbon atom and there's mirror images of this carbon atom as well. दोनों carbon atoms ना या तो plus में होंगे या minus में होंगे. ठीक है, plus or minus. This one would also be plus or minus. तो exactly उसी तरह की combination बनेगी. There's going to be different combinations of the shapes. Either this is plus and the other one is plus, or this one is plus and this one is the mirrored version, which is the minus, or this one is minus and this one is plus, or both of them are minus. Is that clear? सर फिर से रिपीट कर सकते हैं ये वाला? Yes, sir. ठीक है, नहीं वही कॉम्बिनेशन है. वो सिस ट्रांस में क्या होता था कि सिस ट्रांस में जो सिस ट्रांस में होता था वो इसमें है कि सिस ट्रांस में इसकी क्या थी कि दो अरेंजमेंट्स है ना, सिस एंड ट्रांस, राइट? और इसकी भी क्या है, सिस और ट्रांस है ना, मतलब दो शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना. इट्स आइदर ट्रांस और इट्स आइदर सिस, राइट? तो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी? सिस ट्रांस, सिस ट्रांस सिस, और या फिर ट्रांस ट्रांस, राइट? चार कॉम्बिनेशंस बनेगी. इधर भी एग्जैक्टली सेम है कि इधर क्या है, या तो पहला वाला प्लस होगा, मतलब खुद सोचो ना, उसकी जो थ्री डायमेंशनल शेप होगी, या तो वो इस फॉर्म में होगा कार्बन या फिर इस फॉर्म में होगा. समझ आ रही बात? या तो वो प्लस फॉर्म में होगा या वो माइनस फॉर्म में होगा. इज वन क्लियर है? तो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी इस मॉलिक्यूल की, कितनी शेप्स होंगी? या तो दोनों प्लस हो, या उनमें से एक प्लस हो और दूसरा वाला माइनस हो, या पहला माइनस हो और दूसरा वाला प्लस हो, और इट कुड बी बोथ ऑफ देम वुड बी माइनस. सो there's going to be four total combinations. हाँ जी. सर तो लाइक पावर से बस उसके पावर डाल देंगे तो लाइक आंसर आ जाएगा? हाँ, कल नहीं थे क्लास में, कल हमने ये किया था ना, हमने जब उससे पिछली क्लास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स वाली, उसमें हमने किया था 2n करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा. अगर तीन होंगे और तीनों कैरल होंगे तो 2/3 8 आइसोमर्स होंगे, मतलब 8 कॉम्बिनेशंस बनेगी. वो हमने उसमें सिस ट्रांस में किया था कि if you have 3 डबल बॉन्ड्स, तो 3 डबल बॉन्ड्स का मतलब है कि ये सारी कॉम्बिनेशंस होंगी. सिस 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 होगा, सिस सिस ट्रांस होगा, वो सारी बनाते जाओ कॉम्बिनेशंस. तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस होंगी. उसी को ट्रांसलेट करो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बस वो या तो प्लस 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 होंगे या प्लस प्लस माइनस होगा या प्लस माइनस प्लस होगा. तो 8 कॉम्बिनेशंस. ठीक है. प्लस अनलाइक वो जो एल्कीन्स है, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं. तो यहाँ पे इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 2/n. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 2/n, क्योंकि chirality इज हैपेंस व्हेन देयर इज नो सिमेट्री. वो एल्कीन्स के केस में ना हमने उसको कम भी किया था. वी टॉक्ड अबाउट एन एल्कीन बीइंग सिमेट्रिक. तो इन दिस केस chirality के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है कि देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री और देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पे वो सिमेट्री वाला तो इशू ही नहीं है. तो इसलिए एवरी वन ऑफ देम वुड बी यूनिक और हमेशा 2/n वुड वर्क. इज दैट क्लियर एज वेल? यस Yes, सर. sir. चलो इसका थोड़ा सा वो कर लें कि क्वेश्चंस. अभी पहले सिर्फ वो करते हैं कि कायरल ढूंढना है ना. ठीक है. सो कैन यू स्पॉट एनी chiral carbon atoms in this molecule? Is the first one chiral? नो सर. क्योंकि उसका 3 H's है. What about this one? Is this chiral? सर उसकी साइड पे तो CH2 बना हुआ है. मैंने कहा था सारी साइड देखो, पूरी साइड. ये टॉप है उसका, बस हर साइड देखनी है. ठीक है. इसके इर्द गिर्द इमेजिन करो आप इस कार्बन एटम के ऊपर खड़े हो. इस साइड पे क्या आ रहा है टॉप पे? दैट्स CH3, राइट? बॉटम पे क्या आ रहा है? वो ये चीज आ रही है. लेफ्ट पे क्या आ रहा है? ये चीज आ रही है. राइट साइड पे क्या आ रहा है? यू गेटिंग दिस थिंग. सो आर ऑल 4 साइड्स डिफरेंट और नॉट? यस सर, कैरल होगा. तो ये कायरल होगा. डबल बॉन्ड वाला कोई भी कायरल नहीं होगा. 4 सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स. इज दिस कायरल? ये वाला कार्बन, इज दिस कायरल?
No, sir. क्योंकि नहीं होगा। जो दोनों CH3 सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है। CH2 वैसी काइरल नहीं है, ठीक है। CH2 दो H लगे हुए, डबल बॉन्ड हो वैसी काइरल नहीं है। What about this bottom one? Is this chiral? No, sir. नहीं, it is chiral. के remember पूरी साइड देखनी है. Are the two sides different, or are all four sides different or not? So that's one side. That's the other side. इस साइड पे क्या है? It's this thing, right? इस साइड पे क्या है? ये सारा आ रहा है. Are all four sides different or not? ये साइड और ये साइड different है. सर ये कायरल होगा। हाँ. Is that clear? सर Yes, sir. हाँ जी. सर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो एंड में जाके C डबल बॉन्ड O बना रहा है, या उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं। उसी से तो फर्क पड़ रहा है। मतलब आपने पूरी साइड देखनी है, आपने सिर्फ इमीडिएट नेबरहुड को नहीं देखना, क्योंकि वही गलती की थी कि CH2 देखा था। CH2 आपने पूरी साइड देखनी है। क्या आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो आपने देखना है कि ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, राइट? सो ऑल फोर साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी तरह थोड़ा सा और टफ। सो रिमेंबर द मॉलिक्यूल हैज टू chiral कार्बन एटम्स। सर तो उसका आंसर 2 था। हाँ, 2 ही होगा मेरे ख्याल से। तो और थोड़े से जल्दी से कर ले कि अच्छा, स्केलेटल फॉर्मूलास वाले थोड़े से चलो ये कर लेते हैं, दिस वन। अच्छा, वो फिर कह रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढो। मतलब क्वेश्चन की समरी, इज दिस chiral, दिस वन? ये वाला CH2 है, पर C के साथ 2 H's है, so it's not chiral. नो सर। अच्छा, is this chiral, this one? यस। मतलब टॉप पे वो सारी चीज, मतलब टॉप पे ये सारी चीज है। OH है, H है, और ठीक है। सो ऑल इंटायर साइड इज chiral. और कितने chiral हैं? That's chiral. What about this one? Is this chiral? ये वाला? सर तकरीबन Yes, 3 sir. होंगे। ठीक है, that is also chiral, क्योंकि अगर इसके इर्द-गिर्द you look at the sides, that's different. This one is different. This one is different, and this thing is also different. ठीक है, so all sides are chiral, and the top one is also chiral. ठीक है, इस साइड पे ये है, इस साइड पे ये है, इस साइड पे ये चीज है, और इस साइड पे ये। So all four sides are different. So this one has 3 chiral carbon atoms. The top one is not, because anything that's making a double bond is not chiral. अच्छा, ये वाला उससे भी थोड़ा tricky है कि you've got this one. Now this is skeletal formula. पहला वाला कार्बन तो निकल गया, this one, that's out of the question. It's 3 H's. What about this carbon atom? पहले तो बताओ कि in skeletal formulas they don't show you the hydrogens. और ये जो points हैं ना, these are carbon atoms. So how many hydrogens would this have? 1। क्योंकि 3 bonds बन रहे हैं इसके, so there's going to be 1 H as well. So they don't show you H atoms in skeletal formulas. So सारी sides different है कि नहीं? You've got CH3 on one side, you've got an H on the other side, you've got this carbon chain on this side, you've got this carbon chain on this side. So are all 4 different or not? यस सर। क्योंकि ये साइड डिफरेंट है, यहाँ पे OH आ रहा है, that side is different, right? So that means सर that, हाँ जी। सर बाय द वे इस जैसे फार्मूला के अंदर पता कैसे चलता है कि H है, CH2 है, CH3 है? नहीं, वो तो काउंट करो ना, मैं बताता हूँ ना कि इसमें कैसा पता लगा था कि एक H है? हाँ सर, ऑब्वियसली 3 बॉन्ड से तो इसका 1 H हाँ, होगा। इस अगले का बता दो, इसका कितने H होंगे? 2 सर बॉन्ड्स? CH3। नहीं, 2 बॉन्ड्स है ना, ओके सर, 2 बॉन्ड, CH2 सॉरी। तो उसके साथ 2 H होंगे, ठीक है? There's going to be 2 H's. तो वो भी chiral नहीं है इसके साथ। मतलब ये वाला तो एक तो chiral हो गया, ऊपर वाला, इसके साथ भी 2 H होंगे ना। इस वाले के साथ भी there's going to be 2 H's, right? और बता दो कि इसके साथ कितने होंगे, ये वाला जो है। How many? This one. कितने H Sir, होंगे? 1. H। ठीक है, just 1 H. Is this chiral or not? यस सर। क्योंकि एक तो साइड्स देखनी है, ठीक है? Remember, you have to look at the side. So it's got an H, it's got an OH. On one side there's this carbon chain, on the other side there's that carbon chain. Both sides are, all 4 sides are different.
मतलब इस साइड पे ना ये सब आ रहा है, उधर वो चीज आ रही है, सो दैट्स इट्स डिफरेंट, राइट? So this is also chiral. What about this carbon atom over here? तो हमने दो आइडेंटिफाई कर लिए. Let me mark them with इस सारे को हटा देते हैं. So we've identified two of them, right? So that's another one. What about this one? Is your third one? Is that chiral or not? How many H's? Sir, one. One. And is this chiral? Okay, one side. This is the other side. This is the third side, and there's an H on the fourth side. Sorry, all sides are different, right? Chiral होगा. So that is going to be chiral, ठीक है? तो इसके 3 chirals हैं, 1 2 3. फिर इसमें there's no chiral, क्योंकि anything that's making a double bond, that's not chiral. Carbon making double bond, not chiral. Carbon making double bond, not chiral. ठीक है? So there's going to be 3 chirals in this one. तो हाँ जी. सर ये जो मेंथनॉल का आपने देखा, मेंथॉल का, सर इसका कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर हमें ऐसे डिफिकल्टी आ रही हो चेन स्ट्रक्चर में? इसका हाँ सर, मेंथॉल जो नहीं, इसका लाइक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं? इसका तो स्ट्रक्चर ही है. इसको तुम ओपन चेन करोगे क्यों? वो तो तुम पे कोई और चीज बना दोगे. नहीं सर, लाइक जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. नहीं, ओपन चेन वो है ही नहीं, तो वो बनेगा क्यों ओपन चेन? एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल इस तरह है, तो वो है ही साइक्लिक. तो मतलब उसको तुम चेंज तो नहीं कर सकते, वो तो अब मॉलिक्यूल ही है. अगर तुम इसको चेंज करोगे तो वो इट्स गोइंग टू बी सम अदर मॉलिक्यूल, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम मॉलिक्यूल. सर एक्चुअली वो स्केलेटल फॉर्मूला में लाइक डिफिकल्टी आ जाती है ना रीड करने की, तो लाइक इसलिए. नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ कि उसको तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम उसको चेंज ही नहीं कर सकते. अगर तो तुमने इसको चेंज किया, वो तो है ही साइक्लिक ना. तो वो तो ओपन चेन तो है ही नहीं. जो चीज ओपन चेन है ही नहीं, तो वो ओपन चेन कभी हो भी नहीं सकती. समझ आइए बात? यस सर, तो लाइक हम लोग अपने लाइक इजीनेस के लिए ये ऐसा नहीं कर सकते. हाँ, तो वो तो फिर तुम कोई और चीज बना दोगे. तुम अगर कहते हो कि इस चीज को ना मैं इस तरह कर दूं कि 3 कार्बन आटम्स लाइन में बना दूं, राइट? तो मतलब ये तो कोई और चीज है, ये वो चीज तो नहीं है. मतलब इन दोनों में तो बहुत डिफरेंस है. इट्स दे कंप्लीटली टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ये तुम कह रहे हो ना? या सर. तो वही ना, मतलब वो ओपन चेन है ही नहीं, तो वो साइक्लिक है, तो उसने वो साइक्लिक ही है. मतलब यू कांट मेक इट इन, दैट वुड बी अ डिफरेंट मॉलिक्यूल. तो यू कांट डू दैट. ठीक है, चलो ठीक है. मैं एक ना वो इसकी ना पास पेपर की इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए. मैं सेंड दैट वीडियो, ठीक है, इसी वर्कशीट की. आई सेंड द वर्कशीट एज वेल. मेक श्योर यू गो थ्रू दिस, ठीक है, और वो वीडियो खास तौर पे. चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो देन. सर. हाँ जी. सर वो जो आपने कन्वर्जन करवाई है वो जब कंप्लीट हो जाए फिर अपलोड कर देंगे वो ठीक है, वो हाँ 15th. ठीक है. ओके सर. ओके, अल्लाह हाफिज़.